हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विजय एंड पूजा। तो जैसा आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था जैसपर वाली ट्रिप में कि हम लोग बैंफ आएंगे, तो अब हम लोग बैंफ ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। और इस ट्रिप में हम लोग जिस कार से आए हैं वो रही ये हमारी BMW। ये BMW हम लोगों ने ट्यूरो से ही बुक करा ली थी। और एक गाड़ी वो है अपनी एलांट्रा। यहाँ से निकलेंगे बैंफ की तरफ और जो मतलब हम बहुत अच्छी कुछ चीज़ें देखेंगे, जिसमें सबसे टॉप पे मेरी लिस्ट में जो है वो है मोरेन लेक। तो मोरेन लेक, फिर लेक लुई रहेगी और एमरल्ड लेक रहेगी। तो ये तीनों लेक जो हैं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक्स में से एक हैं, जिसमें मोरेन बिल्कुल टॉप पर ही है। तो आप मोरेन के जब फुटेज देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये रियल है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक्चुअली मैंने जो फुटेज देखी वो ऐसी ही थी। वो डिपेंड करता है मौसम पर भी। अगर बादल छा गए तब तो वो आपको नॉर्मल ही दिखाई देगा, बट अगर आसमान खुला रहा जैसे अभी खुला हुआ है तो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। एंड वी गोना डू वाटर एक्टिविटी व्हिच इज कैनोइंग। कैनोइंग करें, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। कैनोइंग करेंगे हम लोग मोरेन में। तो मोरेन में जो कैनोइंग है वो यहाँ के सबसे ड्रीमी एक्टिविटीज़ में से एक है। तो वो हम लोग करेंगे कल। एक दिन का स्टे रहेगा हमारा, वो रहेगा गोल्डन में। गोल्डन जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया में आता है, अल्बर्टा में नहीं रहता। तो ब्रिटिश कोलंबिया बॉर्डर पार करके उस तरफ जाना है और योहो नेशनल पार्क का वो हिस्सा है। तो वहाँ से हम लोग योहो और बैंफ की कुछ चीज़ें देखेंगे। Hello, this is Bighorn Hydro Plant Dam. We are enjoying here. कैमरे में बोलने में अटक गए। Now it's working. अब आ गए हैं इब्राहिम लेक पे। तो बड़ी सुंदर सी लेक है और कलर एकदम ही डिफरेंट है। सबसे मेन चीज़ है यहाँ की, सबसे सीनिक चीज़ ये लग रही है कि एकदम लेक के बगल में बढ़िया ये हाईवे पूरा गया हुआ है बैंफ के लिए, और हम लोग उसी में अभी चलते हुए जा रहे हैं। लेक ये बहुत लंबी है, 25-30 किलोमीटर से भी ज़्यादा का इसका पूरा ये शोर है। और आसमान बढ़िया पूरा साफ़ है। अगर ऐसा ही कल रहा तो लेक लुई और मोरेन में बहुत मज़ा आएगा।
तुम मॉस्किटो स्प्रे लाई हो ना? अभी नहीं लगाया, चलो। अभी धूप है तो मॉस्किटो स्प्रे की ज़रूरत नहीं, मॉस्किटो नहीं काटेंगे। बहुत बड़ा कैनियन है और उसके बाद फिर आप चलते आओगे जब पीछे तो करीब 90 मिनट्स की वॉक के बाद, मिनिमम 90 मिनट आई थिंक लगा होगा, 90 मिनट्स की वॉक के बाद आप पहुँचोगे वाटरफॉल। और इनके कैनियंस अगर आपने नोटिस किए हुए इतने ज़्यादा जायंट हैं और पूरा डीप रिवर फ्लो कर रहा है। इट्स लाइक अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स इन द वर्ल्ड। सो जो कि हमने विंटर में एकदम फ्रोजन फॉर्म में देखी थी और अब हम देख रहे हैं एकदम लश ब्लू कलर में। इट्स सो मैजिकल, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स इन स्टार शेप।
we have reached Bow Lake and we are witnessing this beautiful sunset. We have reached Takaka waterfall. अब पता नहीं हम लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ, वो बट इसका टिकी टाका टकाका ऐसे ही कुछ है। हाँ, टकाका ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन है, जो कि है ब्रिटिश कोलंबिया में। यह नेशनल पार्क। It's Takakwa. टक्का It's Takakwa.